Hello dear students, welcome back to Odia Study Portal. पिले आज आम माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पाठर यूनिट 2 रो प्रश्न उत्तर देखिबा ता सहित यूनिट 3 भी पढ़िबा तार भी प्रश्न उत्तर करदेबा जा द्वारा पाठटा कंप्लीट हो जिवो हला. व्हाट डज ए कोच से अबाउट एन एंग्री एथलीट विषय रे कोच कोन कहिथिले पिले ए कोच यूजुअली वांट्स दैट एन एंगर कैन मेक एन एथलीट डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल. इट कैन पुश समवन टू एक्सेप्शनल एफर्ट बट आल्सो मेक देम लूज कंट्रोल. What were the result of the two first qualifying jump? कौन होला पिले ना Owens दीटा करे फाउल हिथिले. He had no legal mark after 2 attempts. So why did Owens kick the pit? कहीं ना से फ्रस्ट्रेशन थिले नहीं कि एंगर रे फाउलिंग पर सी एंगर और फ्रस्ट्रेशन रे किक मारी थिले पीट को. The handshake was it friendly or hostile? Who offered Owens friendship during the trial? Lose long offered friendship नहीं कि the handshake Long gave Owens after the final was a strong, genuine and friendly, not hostile. Long's behavior showed sincere respect and camaraderie माने बिले जो respectful है लगी not fake gesture. Why did Long speak to Owens during the trial? Was he trying to find out what was troubling him? Yes, Long saw Owens struggling and came over to ask what the problem was and to help. He genuinely wanted to help a fellow athlete qualifying for the final rather than simply knocking out a rival. See, actually चाहूँते ना बिले जितंदु बोली. He really looked the part. What does that mean? कौन होला ना आर्यन सुपरमेसी कहीं से माने कथा होतले जे ये वास्तव रे टॉल और फेयर और एथलेटिक बॉडी थिला सेति में आर्यन सेमती देखा माने लुक्ड द पार्ट सेमती देखा भी जाउछ बोली कहउतले से जिनसटा टी आंसर रे लिखा हिची लिखि देबो. हाउ डिड लूज लॉन्ग हेल्प जेसी ओवेन्स क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल? लॉन्ग गेव ओवेन्स प्रैक्टिकल स्पोर्टिंग एडवाइस. ही टोल्ड हिम टू एडजस्ट हिज अप्रोच, टेक ऑफ so that he would not fall, move his mark back a little or shorten the run up so the foot would land behind the board. आगुरु चिन्ह कर देकी डेम्बो से हेल्प ही थिला ना. Tomorrow is what counts. What did Long mean by this? Did he mean Owens' performance the next day would matter more? Long meant does not panic about today's qualifying. The important contest is tomorrow. In other words, get a safe legal jump now to reach the final. The real opportunity to win or set records will be in the final. आज पे टेंशन नहीं एंगर भी करनी बोली सी गोटे प्रकार एडवाइस देथिले. Did Owens qualify for the final jump? How did he do that? Yes, on this next attempt after following Long's advice, Owens made a valid jump and qualified for the final. In the final, he produced a peak performance, setting an Olympic record of 28 feet 5 inch 1/4 in winning. तो एबे हमें देखिबा बेले एती ये सरला तमरो प्रश्न उत्तर जोटा हमें लास्ट पढ़ी थिले तार यूनिट 3 डिस्कस करबा. देखो, डू यू बिलीव इन द एडेज ए फ्रेंड इन नीड is a friends indeed? Read the following माने एक्चुअली वास्तव रे से गोटे सांगर आवश्यकता सांग को हेल्प करूची कि से जिनसटा ऊपर देखिबा बेले. देखो कोन हला ना दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लूज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम. आंका पई तो सी किछि ना किछि हेल्प पाइछनी तो थैंक करिया पई जाइथिले. आई न्यू दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे. आज फाइनली पहुंची न थांते जदि से तांको हेल्प करि न थांते लूज लॉन्ग ने कि जेसन्स भाबी कि जाइथिले थैंक्स कहबा पई. वी सैट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एंड आवरसेल्फ एंड द वर्ल्ड सिचुएशन एंड डजन ऑफ अदर थिंग. बहुत सारा विषय डिस्कस कले. व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव वी बोथ न्यू दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्मड. जेतबे उठिबा पई आके आसिले रिटर्न होबा पई सेतबे देखिले ये वास्तव रे गोटे भलो फ्रेंडशिप आंकर एस्टैब्लिश हे जाइतिला. लूज वुड गो आउट टू द फील्ड the next day trying to beat me if he could. जदि से पारिबो obviously मते next तांका सहित ही competition अछि, but I knew that he wanted me to do my best. से चाहूतले मु केमति सबटु बेस्ट मोर परफॉर्मेंस देबी even if that meant my winning. भले ही मु जीति जीबी किंतु से चाहूतले वास्तव रे से जीतु पछे भलो परफॉर्मेंस दियो बोली ने कि ये ना गोटे फ्रेंडशिप रो कथा. As it turned out, Luz broke his own past record. निजे से तांकर past record Luz break कले. In doing so, he pushed me onto a peak performance. ये आंको मध्य मोटिवेट कले कि भलो से परफॉर्मेंस करो बोली. I remember that at the instance I landed from my final jump, that one which set the Olympic record of 26 feet 5 and 1/4 inches.
he was at my side congratulating me despite the fact that Hitler glared at us. दूर से गोटे 100 यार्ड दूर भी हबनी सेठू ये देखुले हिटलर किंतु ये हैंडशेक कले लूज shook my hand hard and it was not a कौन फेक स्माइल विथ ए ब्रोकेन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप एदर नहीं कि बिले एमनी हल्का रे जो दुखर सहित सेमती नहीं वास्तव से खुशी थिले यू कुड मेल्ट डाउन ऑल गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव एंड दे वुड नॉट बी पैटिंग ऑन 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट से जतबेले कहले सब तुम नहीं जीव बोली ये मनरे आकर जेलस नथिला ये आउ से फ्रेंडशिप आगरे से 24 कैरेट रो पतला प्लेट रो किछि महत्व भी नथिला आई रियलाइज्ड देन टू दैट लूज वाज द एपिटोम माने प्रतीक ऑफ व्हाट पायर डी कॉर्बेटिन पहले ये मॉडर्न जो ओलंपिक अछि ता संस्थापक थिले पहले फाउंडर थिले मॉडर्न ओलंपिक रो तो से कहिथिले तांगर मतामत कोन थिला मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड द इंपोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट भाग नेबा गोटे जिनिस रे सबटो इंपोर्टेंट जिनिस बोले जितिबा हारिबा तो चलीथिबो ना लर्न करिवो किछि परिवर्तन करिके ट्राई करले जितिबो कि हारिबो अलका कथा द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट टू कन्क्वेयर बट फाइटिंग वेल भल से फाइट करिबा हरैबा नुहो नै कि तो ये होछि तमरो पाठ कंप्लीट हो जाइछि किछि प्रश्न उत्तर तार अछि देखो when did Owens and Long realize that they had become friends केतेबेले जानले पिले से माने Owens and Long realized they had become friends on the night Owens visited Long's room in the Olympic Village. By the time Owens got up to leave after their long talk, both knew a real friendship had been formed. Who was Coubertin? What was his ideal? Pierre de Coubertin was the founder of the modern Olympic game. His ideal was that the most important thing in the Olympic ebe कहली नेकी लेखि परिबो why has Luz Long been called a fine example of Coubertin's ideal काहे न से पिले कोन तांको helped Owens give him the best performance even though it means Owens could win against him से जीति परथांदे ना अंग पर भी बा अपोजिट रे थिले मधु एमती जेलस फेलस किछि नथिला पिले परफॉर्मेंस से फ्री नेचर लोक थिले तो what do you think was the greatest Olympic prize for Jesse Owens कौन पिले gold medal he won in the long jump or the friendship he जो friendship हला obviously friendship टा ही नेगी तो ये तमरो कंप्लीट ही जाइछि तमरो प्रश्न उत्तर नेक्स्ट टाइम अन्य पाठ आगो को बढ़िबा थैंक यू।